Hello, dear students. Welcome to Study Desire. As we are studying about the life process, the chapter life process of Class 10th Biology. And in the previous videos, we have already discussed about the nutrition and about the respiration. Okay, the process of respiration. Now, in this video, we'll be going to discuss about the respiratory system in human being. हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग के बारे में. अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम की, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है इसमें क्या होता है, कुछ ऑर्गन्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स होते हैं, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस में. या फिर हम कह सकते हैं कि पहले ब्रीदिंग और फिर जो ब्रीदिंग दैट मीन्स इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इट consists of a set of organs actually, set of organs. और अभी हम आगे वो भी देखेंगे कौन कौन से organs हैं. और हम कह सकते हैं organs and tissues which perform a particular function. और उनका function क्या है? To take up, तो हम इसको notes के टाइप में लिख सकते हैं, to take ऑक्सीजन को लेना और साथ ही साथ में क्या करना, इस ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना. ओके, एंड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इनटू द बेसिकली क्या हो रहा है, लंग्स में से वो पूरे लंग्स में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिच एयर एंटर कर रहा है. ठीक है, और उसके बाद में फाइनली क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन रिच एयर में से ऑक्सीजन लो लंग के अंदर एंटर कर रहा है और फिर फाइनली पूरे बॉडी में ट्रेवल कर रहा है. Okay, so take oxygen from oxygen rich air and finally transport to every cells. So यहाँ पे हमने देखा पर्टिकुलर क्या फंक्शन है इसका, ऑक्सीजन ले लेता है लंग्स में. ठीक है, सो जो लंग्स के अंदर एयर एंटर करता है, लंग्स के अंदर एयर कौन सा एंटर करता है, ऑक्सीजन रिच एयर, ये एंटर करता है लंग्स में, एंटर. और एग्जिट क्या कौन सा एयर करता है, CO2 रिच एयर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये एयर क्या करता है, एग्जिट करता है. सो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि अगर हम जो ऑक्सीजन रिच एयर इनटेक कर रहे हैं, दैट मीन्स हम जो नोज के जो ये होल्स है, नॉस्ट्रल्स है, उसके थ्रू जो एयर अंदर जा रहा है हमारी बॉडी के अंदर, ऑक्सीजन रिच एयर है, वो क्या हो जाता है, इनहेलेशन. सो मैं लिखेंगे इनहेलेशन. इनहेलेशन क्या होता है, taking up of oxygen rich air through the nostrils. Okay, क्या लिखेंगे, through the nostrils. और साथ ही साथ में दूसरा क्या होता है, जब हम ऑक्सीजन रिच एयर अंदर ले रहे हैं. ठीक है, सब फाइनली ऑक्सीजन फिर हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा, यूटिलाइज हो जाएगा. अब हमारी बॉडी में ज़्यादा क्या हो गया है, जब ऑक्सीजन यूटिलाइज हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है. अब उस कार्बन डाइऑक्साइड को हमें बाहर थ्रो करना है. सो ये क्या होता है, एक्सहेलेशन. इसका मतलब क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम बाहर फेंक रहे हैं हमारी बॉडी से. ओके, सो रिमूवल of carbon dioxide rich air from nostrils, या फिर through nostrils हम actually बोलेंगे. okay, rich air through nostrils. so nostril होते हैं जिसमें से सबसे पहले जो एयर है वो एंटर करता है. अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि वो पर्टिकुलर ऑर्गन्स जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट है. ठीक है, सो ऑर्गन्स और जो टिश्यू बेसिकली हम कह सकते हैं. सो हम बोलेंगे यहाँ पे ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. सो कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, चलो हम फटाफट एक एक करके लिखते हैं. यहाँ पे क्या क्या होते हैं आप रिकॉल कर सकते हैं.
सो हम पहला यहाँ लिख लेंगे, सबसे पहले हम बोलेंगे नोज होता है, नोज। ठीक है, अब दूसरा क्या होता है भाई, नोज के बाद में हम बोल सकते हैं नॉस्ट्रल्स, हम बोल सकते हैं नॉस्ट्रल्स। फिर नॉस्ट्रल के बाद में हम बोलेंगे फैरिंग्स। फैरिंग्स के बाद में ये एयर कहाँ जा रहा है, ट्रैकिया में। और ट्रैकिया के बाद फाइनली ये कहाँ जाता है, लंग्स में। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं ट्रैकिया फिर फाइनली वो डिवाइड होता है दो लंग्स में, और लंग्स के अंदर ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स और फाइनली एल्वेलाई होता है। तो इसके बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। सो यहाँ पे हमने देखा कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ओके, ऑफ ह्यूमन बीइंग विच बिगिंस विद द नोज। सो लेट अस राइट ओवर हियर, इट बिगिंस विथ नोज। ठीक है, सबसे पहले जो एयर वो नोज से एंटर करती है। सो वेयर एयर इज एक्चुअली कंडीशन बाय वार्मिंग एंड मॉइस्चनिंग। वाई, बिकॉज लाइक इन द नोज, इनसाइड द nose, or we can say in the nostrils, okay, small hairs are present, getting, and which the function of this hair is to trap all the dust particles which are present inside the air. नॉस्ट्रल्स के जो हेयर्स होते हैं उनका मेन फंक्शन क्या होता है, जो एयर में बेसिकली जो एयर में क्या प्रेजेंट है, जो हम कह सकते हैं डस्ट पार्टिकल हो गए या फिर और भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए। ठीक है, सो उसको क्या करता है, ये ट्रैप कर लेता है। और फाइनली हमारी बॉडी के अंदर जो एयर एंटर करता है ना, वो कैसा होता है, प्योर एयर होता है, प्योरीफाइड होता है। ठीक है, सो यहाँ पे हम बात करें सबसे पहले नोज की, क्योंकि हम जानते हैं जो एयर है वो नोज के थ्रू अंदर एंटर करता है। ठीक है, नाउ बेसिकली दिस नोज, ओके, इन द नोज देयर इज अ बोनी पार्टीशन ऑल्सो which separates the nasal cavity into chambers. Okay, and thus we can say that there are two nostrils. Getting everyone? So here we have seen that respiratory system begins with the nose. Okay, inside it, okay, we can say that in the nostrils small hairs are present. hairs होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, इनका फंक्शन क्या है, टू ट्रैप। हेयर्स होते हैं और म्यूकस भी होता है बेसिकली। सो ये और ये सीलिया जैसे होते हैं हेयर्स। सो ये ट्रैप कर लेते हैं डस्ट पार्टिकल्स, और क्या करते हैं डस्ट पार्टिकल्स को, एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और फाइनली जो हमारी बॉडी के अंदर एयर एंटर करता है वो कैसा होता है, प्यूरिफाई एयर होता है, प्यूरिफाइड एयर enters into our lung, enters into our lungs. ओके, अब इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट पार्ट जो कि नोज के बाद आता है, और वो है राइट हियर, दैट इज फैरिंग्स। अब हम फैरिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट नॉस्ट्रल के बाद, नोज के बाद नॉस्ट्रल, नॉस्ट्रल के बाद फाइनली क्या आता है, फैरिंग्स आता है। ठीक है, this pharynx is actually a short vertical tube and it is located at the back of the buccal cavity. ठीक है, यहाँ पे हमने क्या बात करा, it is a short vertical tube, vertical tube. ठीक है, और ये कहाँ पे होता है, जो बकल कैविटी के बैक पे, ओके, और ऊपर साइड में होता है। सो बेसिकली हम लिख देंगे लोकेटेड at in the head of, okay, back of, या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं at, okay, क्योंकि यहाँ पे क्या आता है, ये बैक पे होता है, तो at back of the buccal cavity, buccal cavity, cavity. Now this pharynx, it will facilitate the passage of the air from the nose to the trachea. ठीक है, so here we can say that the pharynx, it provides passage, okay, so that the air enters into the trachea. So let us write next over here, provides passage, किसके लिए passage करना है, for the air, for the movement of air,
provide passage to enter into trachea. अब ट्रैकिया क्या हो गया, ये वेंट पाइप हो गया. ओके, और ट्रैकिया के पहले एक बहुत ही छोटा सा ओपनिंग होता है, दैट इज नोन एज द ग्लॉटिस एक्चुअली. सो द एयर एंटर थ्रू दिस ओपनिंग, small opening which is present at the top of the trachea, present at top of ट्रैकिया. अब क्या होता है, ये जो ट्रैकिया है या फिर जो हम बोल रहे हैं ग्लॉटिस, ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं ग्लॉटिस. सो बेसिकली ये जो ग्लॉटिस है, इट इज कवर्ड बाय अ थिन फ्लैप स्ट्रक्चर एंड दैट इज नोन एज द एपिग्लॉटिस. सो हियर वी विल टॉकिंग अबाउट एपिग्लॉटिस. एपिग्लॉटिस. अब एपिग्लॉटिस क्या होता है? इट इज अ thin flap-like structure which is made up of cartilage. Okay, so thin structure which actually covers this glottis. इस glottis को जो epiglottis cover कर लेता है. कब cover करता है? वैसे तो पूरे टाइम में glottis जो है ये open होता है so that air can enter into the trachea. But epiglottis, it is a thin covering which it is a thin flap-like structure which covers the glottis when we are eating. Okay, and why it is done? Because to avoid the food entry inside the our windpipe. So here we can write during the swallowing of food, that means during the time when we eat. Okay, so during the swallowing of food, this epiglottis, it covers the glottis, that means it covers the opening. Okay, and is opening through which when the air enters into the trachea. Okay, now what happens when it covers this glottis? It ensures that food particle, it may not enter into the windpipe. It may not enter into windpipe. अब अगर windpipe में food अगर enter कर जाता है गलती से तो क्या होगा? चोक हो जाएगा. ओके, वी स्टार्ट फीलिंग लाइक अनईजी, और जब तक वो पार्टिकल वहाँ से नहीं निकल जाता जब तक हमें अनईजी फील होगा. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द फंक्शन ऑफ दिस एपिग्लॉटिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इट कवर्स दिस ग्लॉटिस, द स्मॉल ओपनिंग, so that food may not enter into the windpipe. Getting everyone? So till now we have studied about the pharynx and also the glottis and the epiglottis. Now we are going to discuss about the next organ, and that is the trachea. So let us move to the next page and let us write the third one is the ट्रैकिया over here. अब ट्रैकिया क्या होता है? जैसे कि हम सब जानते हैं ट्रैकिया को एक और हम क्या बोलते हैं? विंड पाइप. अब जब विंड पाइप हम नाम से ही समझ सकते हैं, यहाँ पे हम और लिख देते हैं और विंड पाइप. अब इसके नाम से ही हम समझ सकते हैं कि ये पाइप है जिसमें से कि विंड पास या फिर एयर पास होता है और एंटर करता है फाइनली लंग्स में. सो जैसा कि हम यहाँ बात कर रहे हैं ट्रैकिया और अ विंड पाइप, इट इज़ अ थिन वॉल ट्यूब. Okay, and it extends downward through the neck and it is finally divided into the two major bronchi. So let us write about this. So here we can say that after air when pass through the pharynx, okay, air finally passes into the windpipe or the trachea. So after passing through the pharynx, okay, now air passes into the windpipe. pharynx के बाद में एयर कहाँ जाता है? विंडपाइप में, या फिर हम कह सकते हैं ट्रैकिया में. ठीक है, अब ये जो ट्रैकिया होता है ना, इट हैज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ स्मूथ मसल्स, ओके, एंड ऑल्सो विद इट अबाउट 16 to 20 open rings of the cartilage which are C-shaped structure. So on trachea we find C-shaped structure, cartilage shaped structures actually. So here we can write
cartilage shaped structures. Now it is structured as C shape का दिखता है, इसलिए उसको हम C shape कहते हैं. Number it varies from 16 to 20 actually. Okay. Now this cartilage shaped structure ring which is present on the trachea, it actually ensures the collapsing of the trachea when air is not present inside the ring. When air is not present inside the windpipe. That means यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया कि जो कार्टिलेज के रिंग्स ट्रैकिया पे क्यों प्रेजेंट होती है, ताकि जब विंडपाइप के अंदर एयर नहीं है उस समय जो विंड पाइप है वो कोलैप्स ना हो जाए, इसीलिए ये कार्टिलेज की रिंग्स होती हैं. नाउ दीज रिंग्स बेसिकली, लेट अस राइट ओवर हियर, दीज रिंग्स ये क्या करती हैं, ये हेल्प करती हैं कोलैप्स ना होने में. ओके, सो दीज रिंग्स एक्चुअली प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू द ट्रैकिया, सो गिव rigidity to trachea and also ensures that it remains, it will not collapse. Okay, to trachea and ensure that it does not collapse. It does not collapse, ताकि वो collapse ना हो जाए. क्लियर है यहाँ तक? अब हम आगे देखते हैं. ये जो ट्रैकिया है या फिर विंड पाइप, ये कैसा होता है, थिन वॉल ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, अब ये ट्रैकिया जैसे कि हमने अभी देखा यहाँ पे कि कार्टिलेज की रिंग्स होती हैं ताकि ये कोलैप्स ना हो. और कब कोलैप्स ना हो, बिटवीन द ब्रीथ, मतलब कि जब हम 2 ब्रीथ ले रहे हैं उसके बीच का जो समय है जबकि एयर प्रेजेंट नहीं होता है विंड पाइप में, उस समय ये कोलैप्स ना हो जाए. Now let us talk about the other part of this. The opening of this trachea, like it is a silk-like structure. Okay, and as just now we have seen that it has the glottis over here. सबसे पहले trachea के ऊपर में, suppose ये trachea है, यहीं पर ये जो opening है, it is actually the glottis, and it has a flap-like covering, and this is known as the epiglottis. So हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये क्या है, एपीग्लॉटस. और ये जो रिंग है, ये ओपनिंग है, क्या है, ग्लॉटस है ये ओपनिंग. Okay, at the upper end of the trachea, like several folds of the cartilage, as just now we have studied about this, is present to avoid the collapsing. Now, after this, let us talk about the next organ, and that is the larynx over here. Okay, so here we can say that here is the larynx or the voice box is present. Okay, so basically in the larynx a flap like pair of tissue is present, which is called the vocal cord. Okay, so now in this larynx, this vocal cord, they vibrate when we like inhale or exhale, and that produce the sound. So here we can say that this larynx, which is the which we call it as voice box. Because of this only the sound is produced when we like speak. Okay, so in this some vocal cords are present. Okay, or we can say 2 vocal cords are present. These cords, they vibrate when air, like air, when we inhale, when a person exhale and it produces sound. Okay, so it vibrate when we breathe. When we breathe and finally produce, और फाइनली क्या करता है, प्रोड्यूस करता है साउंड. सो साउंड किस वजह से होती है, लैरिंक्स की वजह से होती है. साउंड प्रोड्यूस किस वजह से होती है, लैरिंक्स के कारण, इसीलिए हम उसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं. अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे. सो लेट अस डिस्कस, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज. एट द एंड ऑफ द ट्रैकिया, एट द एंड ऑफ द ट्रैकिया, ट्रैकिया के एंड में क्या होता है, ये जो ट्रैकिया है, ठीक है, ये डिवाइड हो जाता है और फाइनली क्या फॉर्म कर लेता है, इट फॉर्म्स 2 ब्रोंकाई. सो ओवर हियर वी कैन राइट
it forms two bronchi. Okay, so here we can say that the trachea, it divides and forms the two bronchi, after which the lungs are present. So like these, the lungs are present. So now we will discuss about the lungs. Okay, basically the human lung, it is composed of approximately 300 million alveoli, small alveoli, which actually helps in the exchange of gases. Now this lung, they lie in the thoracic cavity on the either on both sides. Okay. Now the thoracic cavity, it is separated from the abdominal cavity, and that is by a partition known as the diaphragm. Okay. So here we can write it is located in thoracic cavity. ये कहाँ पे present होता है? thoracic cavity में. thoracic cavity में present होता है ये, ठीक है, on the sides of the heart. Now like each lung, it is enclosed in the membrane, ठीक है. membrane क्या होता है? that membrane is known as the membrane, जिसमें कि ये जो हमारे लंग्स है ये प्रोटेक्टेड या फिर कवर्ड. द मेम्ब्रेन इज नोन एज द कवरिंग ऑफ द लंग्स. ओके, सो योर वी कैन राइट मेम्ब्रेन, और उसे हम कहते हैं प्लूरा. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, विद इन द लंग्स लाइक मोस्ट द मेजर दिस ब्रोंकाई, विच यहाँ पे जो हमने बात करी है ब्रोंकाई की, ठीक है, ये ब्रोंकाई. नाउ दिस ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड इनटू सेकेंडरी ब्रोंकाई, ठीक है, एंड दीज लेट अस राइट अबाउट दिस. The bronchi divide into secondary bronchi. So here we can write secondary bronchi. secondary bronchi में divide होता है, ठीक है, which like subdivide into smaller even tertiary bronchi. उसके बाद में क्या बनता है? tertiary, और ज़्यादा और divide होते हैं, और वो क्या होता है? tertiary bronchi. tertiary bronchi. Now the tertiary bronchi are finally like divided into the smaller bronchioles. So यहाँ पे next ये आगे चल के और divide होता है और ज़्यादा smaller बनाता है. क्या होता है ये? bronchioles. Okay. Now like each bronchiole divided into the alveolar duct, and alveolar duct which enters the alveolar sac. So here finally we can say that it will divide into the alveolar duct, and finally there are million of alveoli present. Alveoli are present inside the lungs. So here we can say that inside the lung, okay, they are composed of approximately 300 million alveoli. Now what happened? This alveoli, they are like this round shaped alveoli. Okay, now outside the alveoli there are like many blood capillaries covering it like a network. Now from this alveoli, in the blood capillaries, basically the RBCs travel. From the alveoli, oxygen from the alveoli, it will enter into blood capillaries or blood vessels. And finally from the blood vessel, now the blood which is actually deoxygenated. Okay, now from the blood vessel, carbon dioxide enters into the alveoli. This how exchange of gases, it takes place inside the lungs. Okay, or we can say exchange of gases takes place in alveoli. So अभी हमने देखा कि ऑक्सीजन क्या होता है, एल्वियोलाई से कहाँ एंटर कर जाता है? ब्लड वेसल में. और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो कि ब्लड वेसल में प्रेजेंट होता है, फाइनली कहाँ एंटर कर जाता है? एल्वियोलाई में. और एल्वियोलाई से फिर कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर रिलीज कर दिया जाता है. सो उसे हम कहते हैं एक्सहेलेशन. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट,
अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो एल्वियोलाई के बाहर जो कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, गेटिंग, सो कैपिलरीज के अंदर क्या होता है, रेड ब्लड सेल. These are the red blood cells which are found in the blood. Now, what is the major function of this RBC? The function of RBC is to carry oxygen from lungs, okay, and deliver to each and every cells of the body, each and every cells of the body. Now, as this RBC, it contains hemoglobin. Okay, hemoglobin is present inside the RBC. So let us write over here, hemoglobin. Now, this hemoglobin, it has a high affinity, so it can bind to the oxygen. It binds to oxygen and forms oxyhemoglobin. Oxyhemoglobin. ये जो ऑक्सीजन है ना, ये हीमोग्लोबिन से अपने ब्लड में बाइंड कर जाता है आरबीसी में और फाइनली फॉर्म कर देता है ऑक्सीहीमोग्लोबिन. और ये इसी फॉर्म में जो ब्लड के अंदर ट्रैवल करता है और फाइनली ये कहाँ तक ट्रैवल करता है, इनके टारगेट सेल्स तक. ठीक है, अब फाइनली ये कहाँ ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवल इन दिस वे ओनली, इन दिस फॉर्म. किस फॉर्म में, ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन के फॉर्म में. ठीक है, इन दिस फॉर्म ऑक्सीजन ट्रैवल इन ब्लड and reaches to target cell and reaches to target cell. ठीक है, यहां तक हमने देखा. अब जो हमने ऑक्सीजन देख लिया कि ऑक्सीहीमोग्लोबिन के फॉर्म में ब्लड में ट्रेवल करता है. अब अगर हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की, सो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि फॉर्म होता है सेल के अंदर. Okay, carbon dioxide which is produced inside the cell. ठीक है, ये सेल के अंदर प्रोड्यूस होता है. Now it is dumped. अब ये कहाँ पे डाल दिया जाता है, dumped in blood vessel. ठीक है, फाइनली ब्लड वेसल डाल दिया जाता है और ब्लड में ही ये फिर ट्रैवल करके पहुंचता है लंग्स तक. और जब ये फाइनली लंग्स में पहुंचता है तो एल्वियोलाई के थ्रू ये बॉडी से बाहर रिलीज होता है, मतलब जब एंटर कर जाता है लंग्स में और लंग्स के थ्रू एक्सहेलेशन से कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर मूव करता है. ठीक है, अब अगर हम बात करें कि ब्लड में ये किस तरह से ट्रैवल करता है, सो इन ब्लड CO2, it is transported in the form of bicarbonate. You need to remember this is very, very, very important. Carbon dioxide, okay, is transported in the form of bicarbonate. बाइकार्बोनेट. और ये हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ही जो कार्बन डाइऑक्साइड है ब्लड में ट्रैवल करता है. और हम दूसरा भी कह सकते हैं एज वेल एज, इसका एक तरीका और है, एज वेल एज इट इन द डिसॉल्व्ड फॉर्म इन द ब्लड प्लाज्मा. इन द डिसॉल्व्ड फॉर्म इन ब्लड प्लाज्मा, जो ब्लड के प्लाज्मा में ये डिसॉल्व हो जाता है और इस डिसॉल्व फॉर्म में ही ये फाइनली पहुंचता है लंग्स तक. ठीक है, और फाइनली ये लंग्स के बाहर फेंक दिया जाता है, फिर एक्सहेल कर देते हैं. बेसिकली लाइक मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड रीचेज alveoli एज bicarbonate ion and about like 25% of it is like bound loosely to the hemoglobin also. Now like when we inhale, okay, when a person
इनहेल, जब कोई पर्सन इनहेल करता है, जो रिब्स की मसल्स होती है ना, वो क्या होती है, और जो डायफ्राम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है. ओके, सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जब हम इनहेल करें, दैट मीन्स द cavity in which the lungs are placed. Okay, now the air has been filled inside the lungs. Okay, so thereby increasing the volume of the chest cavity. Okay, so when we inhale, air is present, air is like filled inside the lungs. Air is filled inside lungs. ना इस वजह से क्या होता है, जब एयर लंग्स में फिल हो गया है, तो इस वजह से क्या होता है कि जो वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी वो इंक्रीज हो जाती है. सो हियर वी कैन से वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी increases. Okay, and this increase lead to the like reduce air pressure in the chest cavity, and also air rushes into the alveoli so that the exchange of gases occurs. Getting everyone? Now what happened during the exhalation, when the person exhale, जब पर्सन एक्सेल करता है तब क्या होता है. ओके, जब हम एक्सेल करते हैं तो हमारी जो लंग्स में से जो एयर है वो बाहर मूव हो जाता है, तो लंग्स का साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा. ठीक है, सो ड्यूरिंग एक्सेलेशन, और साथ ही साथ में रिब्स क्या होगी, रिब्स और जो डायफ्राम होगी वो रिलैक्स हो जाएगी. सो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, जब हम इनहेल करते हैं, जो रिब्स है और डायफ्राम, ये क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है. डायफ्राम इट कॉन्ट्रैक्ट, whereas when a person exhale, the ribs and diaphragm it relax. So हम यहाँ पे लिखेंगे it relax, and finally the size of the chest cavity also decreases. So जैसे कि यहाँ पे volume of chest cavity increase हुआ था, यहाँ पे क्या होगा, volume of chest cavity decreases. इनहेल जब करेगा और एक्सहेल करेगा तो एक्टिविटीज दोनों अपोजिट होंगी. हमने इनहेल में देखा था एयर इज फिल्ड इनसाइड द लंग्स, हम एक्सहेल में बोल सकते हैं एयर इज लाइक गिवन आउटसाइड द लंग. ओके, एंड ऑल्सो लाइक इंटरनल एयर प्रेशर इंक्रीजेज. सो हम लिखेंगे इंटरनल एयर प्रेशर क्या होता है, वो बढ़ता है, प्रेशर increases. Now finally the compressed air forces alveoli to close, and finally air flows out. Now let us talk about the size or the area of alveoli. Okay, now basically we know that like these alveoli, it actually helps in the exchange of gases. Now particularly these alveoli, okay, as we know that they are like round shape or balloon shaped. इस टाइप का balloon shaped होती है alveoli. ठीक है, और इनके आसपास क्या होता है, blood capillaries. सो इस टाइप की इनके alveoli के आसपास से blood capillaries होती हैं, जिनमें क्या होता है, फाइनली exchange of gases होता है. सो अगर हम बात करें इसके एरिया की, सरफेस एरिया की बेसिकली, तो सरफेस एरिया किस टाइप के, अगर इसको हम पूरी तरह से स्प्रेड आउट कर लें, ठीक है, तो अगर हम पूरे हम इफ यू टॉकिंग अबाउट वन लंग, और उस एक लंग के जो पूरे एल्वियोलाई का सरफेस एरिया हम काउंट करें, कैलकुलेट करें, सो इट इज अप्रोक्सीमेटली, विल राइट अप्रोक्स, इट इज 80 मीटर स्क्वायर, जो कि बहुत ज़्यादा होता है, 80 मीटर स्क्वायर. एंड बिकॉज ऑफ दिस हाई सरफेस एरिया ओनली मैक्सिमम जो एयर का एक्सचेंज पॉसिबल हो पाता है. सो मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ एयर पॉसिबल, एक्सचेंज ऑफ एयर इज possible because of this high surface area. So here we can say that the large surface area available for exchange of gases fulfill our requirement of oxygen. So till now we have like discussed about the all the organs which are involved in the respiration. Okay, now let us understand this by simple diagram also. So here we are moving toward the next page. So this is a diagram of respiratory system.
Now we know that this respiratory system, it begins from this nose. Now over here we can able to see nostrils inside it, okay, which is a cavity, okay, nostril, which is actually the nasal cavity, which leads to the nasal cavity finally, okay. Now after that over here, this is the pharynx, and finally after the pharynx over here, it is the larynx, which is the voice box. Now after the larynx here, we know that there's a windpipe which is known as a trachea. On the trachea we can able to see this as this are the cartilage tree-shaped structure which prevent it from collapsing when the air is not present inside them. Now after this, finally the trachea divides into the bronchi, okay, and finally the secondary bronchi and the tertiary bronchi, and finally leads to the bronchiole. Okay, now after this there are small here, you can able to see in this diagram, alveoli are there, alveoli, which are the small balloon shaped structures which helps in the exchange of gases. And lower here is the diaphragm, which actually separates the thoracic cavity from the abdominal cavity. So like from over here we can say that the air enters through this nose, and from nostrils, and from here it enters through the pharynx, it reaches the pharynx and finally enters into the here over here larynx and then trachea, and finally enters into this bronchi secondary, and finally tertiary bronchi, and finally reach to the alveoli where the exchange of gases takes place. So इस हमने आज के इस वीडियो में हमने पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा. अब हम एक छोटा सा डायग्राम और देख लेते हैं एल्वियोलाई का कि किस तरह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है एल्वियोलाई में. सो लेट अस मूव टुवर्ड द नेक्स्ट पेज. So here we can able to see that particular this are the blood vessels. These are blood vessels. Now this red one, it carries the oxygenated blood, and the blue carries the deoxygenated blood. Now coming towards the next, these round, this balloon shaped are the alveoli, and outside which you can able to see this are network of blood capillaries through which the exchange of gases takes place. So over here we can able to see that like these alveoli, if because of this balloon shaped structure only, it has a great surface area which maximize exchange of gases. So here we can write maximize exchange of gases. Okay, so basically what happens, suppose this is the alveoli over here, okay, and now the alveoli, there is a blood capillary. Suppose it's a blood capillary word. Now what will happen from the alveoli? Okay, oxygen will enter into the blood capillary, and from this blood capillary the carbon dioxide will enter into the alveoli, and finally the carbon dioxide will exit the body through the nose. So in this today's video we have studied about the respiratory system. होप यू लाइक द वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू एवरीवन.